There is an important book in first paper, String of Gold, in which William Shakespeare is a prominent poet, and we are going to study his sonnet, first sonnet. Shall I compare thee? Shall I compare thee is a sonnet. This is well-known sonnet of William Shakespeare. This sonnet has been composed by the poet William Shakespeare, who was born at Stratford-on-Avon, Warwickshire. He was born on 23rd April and died on the same date in 1616. He was born on 23rd April 1564 and passed away on the same date in 1616. He is regarded as the national poet of England. He was not only a poet but also dramatist and playwright. In this poem, we will discuss entirely about William Shakespeare and his well-known sonnet, Shall I Compare Thee? Shall I compare thee? Thee means in this sonnet the poet appreciates, admires his friend. But it is not clear whether the friend is male or female. But he is addressing his friend and has composed this poem regarding his owner who has passed away. But the poet would like to make him immortal with the help of his text, his poem, his inscription in his honor. Now, we are going to study to the text of the poem, Shall I Compare Thee? Shall I Compare Thee? This is the title of the poem, and this is a short poem of 14 lines. The poem of 14 lines is called a sonnet. Shall I compare thee to a summer's day? You are more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease has all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shine, and often is his gold complexion dim. And every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But the eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair you ovest, nor shall death brag you wonders in his shed. When in eternal lines to time you growest, so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and gives life to thee. The poet says that his friend is the most regarded. He is immortal, and there is nothing in this world to be compared with his friend. Because all the objects of this world are mortal but not his friend. Because he has composed poetry regarding the honor of his friend and made him immortal. In the beginning of this poem, shall I compare thee to a summer's day? The poet asks to himself whether he can compare to his friend with summer's day, means with summer season. The poet wants to compare his friend with summer season. But
He further approaches to the conclusion and clear, you are more lovely and more temperate. Means the poet criticizes his own thoughts and says that his friend is more lovely and more temperate, means full of energy, full of power, sturdiness in the comparison of summer's day. Means the poet says that summer season is not liable to be compared with his friend. Why? Because rough winds do shake the darling buds of May. He says that due to rough winds, strong winds, heat waves, darling buds of May, the buds, the blossoms which bloom during summer season are shaken away, are faded, are destroyed in the month of May. Means to say, the beauty of the summer is not permanent. The blossoms and buds have been introduced in the form of the beauty of the summer, but this beauty is temporary. This is not permanent because the darling buds, the beautiful tender buds and blossoms are faded, destroyed during the month of May. Means after a short time the beauty of the summer is not existed. It just stay away, so that it is not liable to be compared with his friend. कहने का मतलब ये है, कवि अपने दोस्त की तुलना गर्मी के मौसम से करना चाहता है, लेकिन वह खुद अपने निर्णय से संतुष्ट नहीं है और वो कहता है कि गर्मी का जो सीजन है वो उसके दोस्त से तुलना करने के काबिल नहीं है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, और जो समर सीजन की सुंदरता है और जो उसकी पावर है, स्टर्डीनेस है, ये परमानेंट नहीं है। ये गर्मी के मौसम में जो हवाएं चलती हैं, लू चलती है, हीट वेव्स हैं, वो उन सुंदर कोमल कलियों को समाप्त कर देती है, तोड़ देती है। इसलिए गर्मी की सुंदरता परमानेंट नहीं है, इसलिए गर्मी के सीजन से उसके दोस्त की तुलना नहीं की जा सकती। Summer's lease has all too short a date. Summer's lease का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म हायर। लीज लॉन्ग टर्म हायर, इन लंबी समयावधि के लिए किसी चीज को किराए पर ले लिया जाता है। Here the poet clears that the lease of summer is not permanent. It will be destroyed, it will be cancelled after short time. Means to say, as soon as the rainy season arrives, then the existence of the summer is dismissed. It stay away. जैसे ही बरसात आती है तो गर्मी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसलिए गर्मी का सीजन जो है उसके दोस्त से तुलना करने के काबिल नहीं। क्लियर? ये एक स्टैंजा कंप्लीट हो गया, ये 4 लाइन का स्टैंजा। अब आगे फिर कह रही, सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम। Now once again the poet would like to compare to his friend with the eye of heaven. What is eye of heaven? Eye of heaven, eye of heaven means the sun. Eye of heaven means the sun. Here the poet would like to compare to his friend with the eye of heaven means to the sun. यानी कवि फिर से
अपने दोस्त की तुलना सूर्य से करना चाहता है, एंड ऑफन इज इज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम, बट he further says that the gold complexion means to say shining rays of the sun are not liable to be compared to his friend. यानी सूर्य की जो किरणें हैं या जो सूर्य का जो सुनहरी रंग है वो भी उसके दोस्त से तुलना करने के काबिल नहीं है, उसके योग्य नहीं है। बिकॉज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द सन is also faded, is also become lower and lower, and it vanishes as soon as it approaches to the evening, means as soon as the sun approaches to the horizon, then its radiance, its luminous and bright rays becomes dim, and it also loses its existence and just dismal under the darkness of the evening at night. Means to say, the sun is not liable to be compared with his friend because it is not permanent. It will also lose its existence and sets behind the horizon. कवि कहता है कि सूर्य भी उसके दोस्त से तुलना करने के काबिल नहीं है, क्योंकि जैसे ही सूर्य क्षितिज पर पहुंचता है तो इसकी रोशनी भी कमज़ोर पड़ जाती है, धूमिल हो जाती है और फिर अंधेरे का आगोश में खो जाती है। इसलिए सूर्य जो है ये भी उसके दोस्त से तुलना करने के काबिल नहीं। क्लियर? फिर आगे, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, every fair from fair sometimes decline. The poet further says that every fair means beautiful, attractive, glorious objects also lost its charm, its color. By chance it may lose its charm or attraction by chance, or during the changing course of nature, which is untrimmed, which cannot be changed. Untrimmed means which cannot be changed or altered. Means to say, every fair and beautiful object of this world changes its charm and attraction. संसार की प्रत्येक सुंदर से सुंदर चीज जो है वो भी अपना आकर्षण खो देती है, बाय चांस आकस्मिक रूप से भी खो सकती है, और प्रकृति के क्रम के हिसाब से जो कभी बदलता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज पैदा होती है वो मरती जरूर है। इस तरह से हर सुंदर चीज जो है एक न एक दिन अपनी सुंदरता खो देती है, समाप्त कर देती है, मतलब परमानेंट नहीं है। मीन्स द पॉइंट सेज दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड, सो दैट none of the object of this world is eligible to be compared with his friend. संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे कि उसके दोस्त की तुलना की जाए। बट लेकिन आगे फिर ये चेंज करके बोल रहा है, बट द एटर्नल समर शैल नॉट फेड। एटर्नल मीन्स इंटरनल, eternal summer shall not fade. The poet further says that the eternal summer of his friend will not be faded. कवि कहता है कि उसके दोस्त की अंदर की जो गर्मी है वो कभी फीकी नहीं पड़ेगी। अंदर की गर्मी से मतलब उसका पावर, उसकी स्टडीनेस, उसका नेम एंड फेम, उसके स्पिरिट, उसकी सोल, ये कभी फीकी नहीं पड़ेगी, कभी भी अपना आकर्षण नहीं खोएगी।
nor lost possession that fear you waste, neither his beauty nor the objects which belongs to the poet's friend will remain attractive forever and ever. कवि कहता है कि ना तो उसकी सुंदरता कम होगी, ना ही उसके दोस्त से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कभी अपना आकर्षण खोएंगी। वो युग युगांतर तक बिल्कुल ऐसे ही सुंदर बनी रहेगी। कैसे? ऐसा कैसे संभव है? तो यहाँ एक कवि सीक्रेट क्लियर कर रहा है। हियर द पोइट क्लियर्स दैट ही हैज कंपोज्ड पोएट्री रिगार्डिंग द ऑनर ऑफ हिज फ्रेंड। He has composed poetry regarding the honor of his friend, and he has discussed his qualities, his virtues in his poem. जैसे कि कवि कहता है कि उसके दोस्त के बाल काले हैं, ये बात उसने कविता में लिख दी एक लाइन के अंदर कि दोस्त के बाल काले हैं और उसकी घड़ी जो है वो चमचमा रही है। तो फिर आगे आने वाली 25, 50, 2000 साल बाद में भी जो पीढ़ियां उस कविता को पढ़ेंगी उसमें भी उसकी जो घड़ी है वो चमचमाती हुई रहेगी, क्योंकि लाइन में ये लिखा हुआ है कि हिज रिस्ट वॉच इज शाइनिंग ब्राइटली एंड हिज हेयर्स आर ब्लैक सो दैट हिज हेयर विल नेवर टर्न वाइट। उसके बाल कभी सफ़ेद ही नहीं होंगे। Means here the poet shows the way of immortality in this mortal world. He says that literature is the way by which we can achieve immortality in this mortal world. कवि कहता है कि साहित्य एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हम इस नश्वर संसार में अमरता प्राप्त कर सकते हैं। Nor shall death brag you wonders in his shed. He further says that death cannot touch to the shadow of his friend. The poet clears that death cannot remove to the existence of his friend. कवि कहता है कि मृत्यु जो है उसकी छाया तक को नहीं छू सकती है या उसके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकती। मीन्स death can destroy the structure of his friend, but not his virtues, his qualities, his merits, his beauty, his charm, because all these virtues have been described in the form of his poems. Means the poet has composed poems regarding the honor and virtue of his friend, and his friend will remain immortal in the form of his poems. When eternal lines to time you grow waste, when eternal lines to time you grow waste, the poet clears that eternal lines means his virtues will grow higher and higher and higher as the time will pass. यानी जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे उसकी क्वालिटीज, उसकी वर्च्यू, उसके गुण जो हैं और बढ़ते चले जाएंगे। So long as man can breathe or eyes can see, so long live this, and this gives life to thee. Finally, in these two lines, the poet approaches to the conclusion and clears that until this world will remain in existence, up to that time, his friend will live as an immortal person. So long as man can breathe, यानी जितने लंबे समय तक लोगों की सांसें चलेगी, यानी जब तक इस दुनिया में लोग जिंदा रहेंगे, और आइज कैन सी, और उनकी आंखें होंगी, वो आंखों से इस दुनिया को देखते रहेंगे। सो लॉन्ग लाइफ दिस, उतना ही लंबा उसका जीवन होगा, उतना ही लंबा उसका जीवन होगा उसके दोस्त का। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और यही उसको जीवन देता चला जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि उसका दोस्त जो है वो साहित्य के रूप में अजर अमर हो जाएगा इस दुनिया के अंदर। क्लियर? In this complete poem, the poet would like to teach the lesson of immortality in this mortal world. The poet says that nothing is permanent in this world, but literature will remain permanently, because ages after ages, new generation will take place, new generation will take birth in this world, and the views, the thoughts, the poems which will be transferred to the next generation. In this way, the identity, the beauty, the virtue of his friend will remain, carry on, going on further and further, and ages after ages, he will remain alive in the eyes of the new generation, new posterity, and he will be read after 2000 years later. 2000 साल बाद में भी उसको पढ़ा जाएगा, और जब जब लोग उसको पढ़ेंगे तो उसकी आत्मा उनकी आंखों में देखी जाएगी। इस तरह से द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस सोनेट इज टू टीच द लेसन ऑफ इमॉर्टेलिटी इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड। ही सेज दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, बट लिटरेचर इज द वे टू सीक साल्वेशन इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड। यानी इस नश्वर संसार में साहित्य एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। साल्वेशन का मतलब था मोक्ष। क्लियर? नाउ दिस सोनेट हैज बीन कंप्लीटेड। कंप्लीट हो गया है ये। अब इससे रिलेटेड इसका सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन, इससे रिलेटेड नोट्स, लेटर्स, जो भी है स्टडी मटेरियल जो है, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड जो है हमारी साइट पर आप विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। गॉट इट? हैव ए नाइस डे।